dear students, welcome back in our today's mathematics class. Students, in our previous video we have completed exercise 4.2 and 3, which is very simple because the topic is only basic geometric ideas. Now today we are completing our chapter 6, chapter 4, because 4.4, 4.5 and 4.6 all three exercises we are completing here, because only few questions we are having. Total 9 questions we are having and all are very simple they are. Okay, so we are completing our chapter 4 today in this video, right? So before starting the exercise, let me introduce few topics which we will be dealing in these exercises. Okay student, so what first of all topic which will do the question according to that, based on that topics. One is opposite side and one is adjacent side. Student, opposite means, as you know, if any quadrilateral is, if any figure is there, do you have, suppose this is a rectangle, you are having one rectangle, fine, and naming is A, B, C, D. What are the opposite side? Opposite मतलब उसके बिल्कुल सामने वाले. So this AB, this side के opposite क्या है? DC. फाइन. और एंगल की बात करें, अगर एंगल D है, एंगल D का opposite एंगल will be angle B. This is opposite, right student? Now coming to adjacent. Adjacent means बिल्कुल neighbor वाला. Neighbor means साथ वाला. फाइन. अगर हम साइड की बात करें, AB का जो नेबरहुड साइड है दैट इज BC, और यहाँ से AD है ना. नेबरहुड मतलब साथ वाला. So these are the adjacent side, but this is not adjacent side, this is opposite side. So God student, what is adjacent? बिल्कुल साथ वाला. Like एंगल A है, एंगल A का adjacent एंगल कौन सा है? One is angle D and second is angle B. दोनों साथ वाले हैं. C तो opposite है. Got student, what the meaning of adjacent and what the meaning of opposite. So on the basis of this topic we will do the question. That's it. This for this. Now next topic. Next topic is based on a circle. As you know student, circle जो है हम, if I will make with the compass, तो हमारे पास हमेशा एक center आता है. Okay, so that is called center. If I give the name center O. और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं सर्कल? व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द सर्कल? व्हाट आर द पार्ट्स? रेडियस. अब रेडियस क्या होता है? सेंटर से जो लाइन सेगमेंट निकले विच टच द एट द वन एंड ऑफ द सर्कल, सेंटर से पास होना जरूरी है. ठीक है, अगर आप यहाँ से मतलब पास कर दो ये, तो ये रेडियस नहीं होगा. रेडियस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर. ओके, एंड डायमीटर भी फुल कॉर्ड, फुल लेंथ, दोनों पॉइंट जो है, दो एंड पॉइंट टच होने चाहिए सर्कल के, पर passes through the center. This thing you already have in your junior classes, right? Now third part of the circle is chord. Chord क्या होता है? It is a line segment. तो line segment तो diameter भी है, right? It is a line segment which join two end point of a circle. टू एंड पॉइंट. अब देखो ये डायमीटर जैसे है, ये टू एंड पॉइंट सर्कल के टच कर रहा है. यस, एंड इट इज अ लाइन सेगमेंट. यस, बट इट पासेस थ्रू सेंटर. डायमीटर में सिर्फ इतना चेंज है दैट इट इज पासेस थ्रू सेंटर, तो दैट इज डायमीटर. उसके अलावा सेंटर को छोड़ के अगर हम कहीं पे भी कुछ भी लाइन बनाएं लाइक दिस, सो दिस इज कॉल्ड कॉर्ड बिकॉज इट टच बोथ द एंड ऑफ अ सर्कल. फाइन. सो सेंटर से पास ना हो तो कॉर्ड, बट अगर सेंटर से पास हो तो उसे डायमीटर भी कहते हैं, एंड डायमीटर इज आल्सो अ कॉर्ड बिकॉज डायमीटर सैटिस्फाई द कंडीशन ऑफ कॉर्ड. राइट स्टूडेंट? नाउ one more part is there, arc. ARC. What is arc? Student, as you know, compass से जो हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, सपोज दिस इज अ कंपास, तो व्हेन वी आर ड्रॉइंग दिस सर्कल, ये क्या है? ये हम आर्क लगा रहे हैं. सी दिस इज कंपास. What is this? This is arc. ठीक है. So if I make this, ये वैसे पूरा ही आर्क से बना है, बट अगर आपको आर्क शो करनी है अपना सर्कल, तो आप किसी भी पार्ट पे कहीं पे भी ऐसे आर्क दिखा दो. सो दिस पॉइंट इज E, दिस पॉइंट इज F, मतलब E F. ये क्या है? आर्क.
राइट स्टूडेंट। अब आर्क से हमारा क्या बनता है, सेक्टर। सेक्टर मतलब उसका थोड़ा सा पोर्शन, और वो सेक्टर कहाँ से निकलेगा, मतलब जैसे आपके पास सपोज एक पिज्जा है, अगर आप उसको कट करते हो तो सेंटर से ऐसे एक पीस निकाला आपने, दिस इज वन पीस, ये क्या है, वन पीस मींस इन मैथमेटिक्स इट्स कॉल्ड वन सेक्टर, दिस इज कॉल्ड सेक्टर। सो आर्क से, ये आर्क हो गई स्टूडेंट, आर्क से जब हम उसको सेंटर से टच करें, सी हियर, सी दिस इज सेक्टर, ये कम पोर्शन है माइनर सेक्टर, ये पूरा भी सेक्टर ही है बिकॉज दिस इज आल्सो मेड बाय आर्क, बट दिस इज मेजर सेक्टर, बड़ा पार्ट है, गॉट स्टूडेंट। और जो हम कॉर्ड से बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट, ठीक है, कॉर्ड से जो पोर्शन बनता है दैट इज कॉल्ड सेगमेंट, और आर्क से जो पोर्शन बनता है फ्रॉम द सेंटर दैट इज कॉल्ड सेक्टर। सिर्फ इतना डिफरेंस है सेगमेंट और सेक्टर में। गॉट स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड दीज पार्ट, दे आर वेरी सिंपल, सेंटर, रेडियस, diameter, arc, fine, from arc you made segment and then chord. Got student, these 5 parts are there in a circle. So this is all about only your introduction part about all rest of the exercise. Okay, now let's quickly start the exercise questions. Start first of all exercise 4.4. Okay, let's start the exercise question. Question number 1 we have, draw a rough sketch of a triangle ABC. So solution means आपको एक triangle बनाना है जिसकी साइड है A, B, C. Right student? Now next point is make a point P in its interior. इस triangle के interior you can make a point P and a point Q in its exterior. Exterior means इस triangle के बाहर. So anyway you can make one point Q in its exterior. God, fulfill the condition. Next is the point A in its exterior or interior? मतलब ये जो point है उन्होंने पूछा है कि ये interior में है triangle की या exterior में है। As you can see student, कहाँ पे है? Yes, it is neither in interior nor in exterior. क्या है ये? Because A is a vertex, एक point है, vertex है जहाँ पे angle बना, जहाँ से दो rays pass हो रही हैं. So it is. So what you write answer? A is neither in interior nor in exterior. ना ही अंदर है और ना ही ट्रायंगल के बाहर है. A is a vertex. Got student? Very simple question. Okay. Now coming to question number 2. This is again very simple question. You have a figure triangle. ठीक है. Your A part is identify 3 triangle in figure. मतलब आपको कोई भी 3 triangle लिखने हैं. So as you can see, सबसे पहले A B C. This is a triangle. Solution write down triangle A B C. Sign write down triangle A B C, comma then C B A D. So triangle B A D. 3 बोला है. So and one more triangle DAC. DAC. That's it student. Fine. But write the name of 7 angles. Angles means student vertex पे हमेशा एंगल बनता है. So B पे एंगल बन रहा है, A पे, D पे, C पे. Fine. और उनके आर्म्स क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट. एंड सी स्टूडेंट C इज अ कॉमन लाइन. सो D जो है वो B के साथ भी एंगल बना रहा है और C के साथ भी, मतलब ट्रायंगल की फॉर्म में. हाउ सी एंगल, अगर मैं D लूं पहले, मतलब जहां आपका एंगल बना दैट विल बी मिडल पार्ट. ठीक है, D. सो ADB, ADB, then angle ABC. Got student? Then one more angle ABC. अब B पे एंगल बना and ABD. Angle ABD. You have to write down 7. Many you can write down, but according to given question 7 you have to write. So we have to 4. Now if I take C as a common, then angle ACB and angle ACB. Fine. Now I am taking A angle common. So angle BAD.
AD. गॉट स्टूडेंट? सो 1 2 3 4 5 6 7 जो भी एंगल है उसको मिडल में लिखो और उसके आसपास के एडजेसेंट आर्म, जैसे ए पे एंगल बन रहा है तो डी और बी, ए पे बन रहा है तो सी और बी, कहीं पे भी, पर जो एंगल जहां बन रहा है वो मिडल में आना चाहिए. दिस इज द रूल, राइट? नाउ सी पार्ट, नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट. अब लाइन सेगमेंट स्टूडेंट पता है आपको कहां से शुरू कहां तक खत्म. इफ हमने ये ड्रॉ की, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, then AC is also line segment, then AD is also line segment, then BC is also line segment, BD is also line segment. So in such a way DC is also line segment, DC is also line segment. Are you getting my point? BD यहाँ से यहाँ तक, AC starting point यहाँ से यहाँ तक. So as you can see 1 2 3 4 5 6 we have the 6 line segment. Got student? Very simple. Now the last part, which two triangle has B as a common? As you can see कि angle B कहाँ पे बन रहा है? दो बार ABD and then ABC. So किस पे दो angle B common आ रहा है? And angle B is common in किसमें student? Angle ABD and एंगल ABC. और आपने देखा B जहां एंगल बन रहा है that would be in the middle. Right student? This is very simple. Now coming to next exercise. Now student, now coming to exercise 4.5. So question number 1 we have, draw a rough figure of a quadrilateral PQRS. Question see, this much long question, but answer is just a single line only. See, PQRS क्वाड्रिलेटरल बनाना है. सो एनी PQRS क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड का कोई भी एक फिगर बनाया आपने. नेम क्या है? PQR and S. Right? Now name them. We have given name them. Draw its diagonal. Diagonal you know student? These are diagonal opposite side जब हम points we are joining. So diagonals we have joined and name ये है. Is the meeting point of the diagonal. Meeting point कहाँ diagonal meet कर रहे हैं? Suppose here and name दे दीजिए O. ठीक है? Meeting point of the diagonal in the exterior or in the interior of the quadrilateral. Very simple. कहाँ है? Obvious in the interior. So how you will write the solution? The diagonal PR and QS meeting at O, which is interior of the quadrilateral. That's it. Very simple. Okay. Now coming to question number 2. Now question number 2 we have, draw a rough sketch of KLMN. आपको एक रफ स्केच बनाना है KLMN मतलब quadrilateral. So quadrilateral make name is KLMN. Naming you can start from anywhere. You can add KLMN but in a same direction मतलब clockwise या anti-clockwise. But it should be in a systematic manner. Okay. We made now A part we have two pairs of opposite side. We have to write down two pairs of opposite side. Opposite side I told you introduction part. Suppose if I am taking KN उसका pair opposite side कौन सा है? LM. Fine. Comma if I am taking NM so उसका opposite क्या है student? Opposite KL. That's it. Two pairs we have written of opposite. Next is two pairs of opposite angles. अब opposite angle लिखने हैं. N का opposite angle क्या है student? Angle L. Very good. Now उसके बाद angle K का opposite क्या है student? Angle M. Very simple. Now C part, two pairs of adjacent side. Adjacent साथ वाली. ठीक है? If I am taking KN तो इसका adjacent and right KN इस तरफ तो adjacent and M.
NM. Fine. If I am taking KL, तो उसका एडजेसेंट क्या होगा स्टूडेंट? KL, तो एडजेसेंट LM, मतलब बिल्कुल साथ वाला स्टूडेंट. गॉट इट? इफ यू राइट KL, सॉरी LK, तो इसका एडजेसेंट KL. गॉट स्टूडेंट? फाइन. एडजेसेंट मीन को बिल्कुल इसके साथ वाला. फाइन. नाउ नेक्स्ट डी पार्ट, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल. अब देखो एंगल N, इसके दो एंगल पेयर है, बट आपको कोई भी एक पेयर बनाना है. एंगल N के साथ का and angle M, they both are angle N and angle M. If I write angle L का adjacent angle M, any angle you can write, it's your choice only, but according to condition हमें सिर्फ दो पेयर लिखने, that we have written. That's it student. This is very simple question in these exercises. Okay, this is all about your question number 2. Now coming to our question number 3. Now student, exercise 4.5 question number 3. Question number 3 is a reasoning question. See, I have not written question because it's too lengthy question only, but I am explaining you what exactly in the question. This question no need to do in your notebook because this is an activity type question. Okay, तो question basically बोला क्या, that I am going to discuss with you. What is that using strip use करके you have to make one triangle. Okay, and you have to make one quadrilateral, means square बनाओ, rectangle बनाओ, your choice. Fine. So one triangle you have to make and one rectangle you have to make, and from its vertex means these vertex, these are the vertex. Yes. So ये vertex से you have to push, means you have to force, आपको उसे अंदर की तरफ push करना है from its interior, from every vertex. यहाँ से करो, and likewise in the quadrilateral also. And then you have to see what changes you will see afterwards. This you will do, then you can ultimately you will see कि क्या हुआ. Next line है, there is a one line that usually you have seen wherever some bridges are there or electric tower you have seen, they mostly are in triangular form. Yes, triangular shape में होते हैं. ऐसे जो towers होते हैं, इतने बड़े बड़े towers होते हैं, basically in triangular shape. और bridges में जैसे bridges है, उसके नीचे डाउन साइड, सपोर्टर साइड ट्रायंगल की शेप में ऐसे होते हैं ब्रिजेस में. हैव यू सीन स्टूडेंट दिस वन बिग टावर? व्हाई इट इज सो? क्यों ट्रायंगल ही बनाए जाते हैं, क्वाड्रिलेटरल क्यों नहीं बनाए जाते? दिस इज अ जीके टाइप क्वेश्चन आल्सो. Okay, so first of all you make it and you just see it what happen. So although the GK question is electric tower या bridges जो है वो triangle shape में ही क्यों बनते हैं? Why not in the quadrilateral shape? स्टूडेंट बिकॉज आप खुद देखोगे जब आप इसके वर्टेक्स से इसको अंदर की तरफ पुश करोगे ना बेटा, ये डिसऑर्टेड नहीं होता, डैमेज नहीं होता है. बट ऑन द अदर वे स्क्वायर या रेक्टेंगल कोई भी जो क्वाड्रिलेटरल है वो फ्लैट हो जाता है, डिसऑर्डेड, खराब, उसकी शेप खराब हो जाती है. एंड अगर आप इसे एनर्जी लगाओगे, पुश करोगे, तो जो एनर्जी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है ट्राइंगल में, इक्वल प्रोपोर्शन में, बट क्वाड्रिलेटरल में ऐसा पॉसिबल नहीं है. इसीलिए दिस ट्रायंगल इज प्रेफर्ड इन एवरी इलेक्ट्रिक टावर या कोई भी जो बड़ी चीज है बिल्डिंग्स टाइप में, वी यूज दिस ट्रायंगल ओनली बिकॉज दिस इज most even you can say stable figure shape. Fine, that is why, and if you will do this activity then also you will see. ठीक है. एंड बेसिकली क्या है, मतलब इसकी एनर्जी जो है ट्रायंगल में इक्वल अमाउंट में शेयर हो जाती है, इसलिए ये जो शेप है ये स्टेबल रहता है, मतलब ये डिसऑर्डेड या स्पॉइल, खराब नहीं होता. ओके स्टूडेंट, सो बेसिकली दिस इज ओनली ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 3 which is based on reasoning only, no need to do in the notebook. Okay, now coming to our next exercise, the last exercise of this chapter 4.6, which is very simple student, and 4 questions we have in this exercise. 2 questions I am doing over here, and question number 3 and 4, that is homework for you. Question number 3 and 4, that is homework for you, because question number 3 is based on your question number 1 and question number 4 is based on your question number 2. Very simple student, you can see and easily you will get the answer. Okay, so that is why I am not going to discuss over here also, because they are very simple, right? Now coming to question number 1, from the figure, this figure is given to you, identify.
In such type of question, you already have in its junior classes, right student? So see, A part, the center. Where is the center? Here. So center is point O. That's it. You have to write down. Okay. 3 radii. Student, radii means रेडियस ओनली. अगर हम एक रेडियस की बात करें दैट इज रेडियस. अगर किसी सर्कल में एक से ज्यादा रेडियस है सो प्लूरल दैट इज रेडियाई. इट मींस रेडियाई इज अ प्लूरल ऑफ रेडियस. ओके. नाउ चेयर, चेयर्स है ना. तो इसी तरह रेडियाई 3 है तो वैसे रेडियस का रेडियाई हो गया. सो फ्रॉम द सेंटर से यहाँ तक ओसी is one of the radii. Center से this OA is radii and one more center से this B OB. Student जो भी लाइन आपकी सेंटर से not full one end of the circle को टच करे सेंटर से पास करके that is radius only. Right? Now a diameter. डायमीटर जो दोनों एंड के सर्कल को टच करे. सो सेंटर से पास हो गई. सो ओनली वन रेडियस वी हैव AOB. Sorry, one diameter we have. Right? Now chord. Chord diameter is also a chord. So we can write down also AOB. But basically, according to this figure, what is chord? It's a line segment that join the two ends of the circle. Right? Joining at the two ends of the circle. So AD is a chord. Okay. AB भी लिख सकते हो आप. Sorry, AC also you can write. AOC it is student. Right? Now 2 points in the interior. आपको 2 पॉइंट लिखने जो कि इसके अंदर है. कौन से स्टूडेंट? This is point P and point O. Point P and point O. A B इंटीरियर नहीं है. A और C इंटीरियर नहीं है. It is on the circle. Okay, इंटीरियर पॉइंट्स पूछे थे. Now a point. A means one point on the exterior. That's you found point Q. Very simple student. हर कुछ everything is given in front of you. You just need to write down. A sector. Sector मैंने क्या बताया था? जो आर्क से बने और सेंटर से पास हो. Now this is a sector. ये आर्क है. ये भी आर्क से जब सेंटर से दैट एनी सेगमेंट जो है पार्ट जो है निकलता है दैट इज कॉल्ड सेक्टर. सो AOB इज अ सेक्टर. राइट? अ सेगमेंट. सेगमेंट कॉर्ड से बनता है. सो वेयर इज सेगमेंट? दिस इज अ सेगमेंट. ED is a segment. Very simple student. I hope you got this on the part of a circle which is very simple. Okay. Now coming to question number 2. A part is every diameter of a circle is also a chord. अगर true false लिखना होगा तो आप repeat true or false. क्या पूछा है? Is every diameter. क्या हर एक diameter किसी सर्कल का उसे हम chord कह सकते हैं? Yes, because diameter भी दोनों एंड सर्कल के दोनों एंड को टच करता है. Chord is also it touch join at the two end of the circle. So what you will write? Yes, every diameter of a circle is also a chord. Next, is every chord of a circle is also a diameter? No, क्योंकि diameter के लिए condition क्या होनी चाहिए? It should be passes through the center of the circle. But chord सेंटर से पास हो then it's diameter. The center से पास नहीं हो रहा है so it's not a diameter. Okay, so every chord, no, every chord of a circle is not a diameter. That's it student. So this is all about your question number 2 and question number 3 and 4. They're very simple. It is your homework. Only 2 questions I am giving you as a homework. So this is all about your exercise 4.4, 5 and 6 and completed of chapter 4 which is very simple and I hope you enjoyed also a lot while doing these questions because they are very simple. Right student? So complete your work, do your work very nicely. If you have any problem you can ask in the comment section and you can call me anytime. Okay? So till then, bye bye student. Thank you so much.